t-test to take the significance level, and here the null hypothesis represents b बराबर b0, b बराबर b0, और and alternate hypothesis b not equal to in the two tail, because we want to analyze the both in lower end and upper end. So it is the two tail. It is the null hypothesis. It is the null. And here, तो यहाँ पे null hypothesis हमको reject होना चाहिए कि accept होना चाहिए? बोलो ये हमको बताइए. जो हम काम कर रहे हैं, जो हम टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमको the null hypothesis of B can be tested by the use of the t-test, where null hypothesis represents that the regression coefficient B means the regression coefficient, the value of regression coefficient is equal to the value of the regression coefficient of the population, and alternate represents that the value of the regression coefficient is not equal to the value of the regression coefficient of population. That is the two tail. It is considered in the two tail. And now T, likely in the earlier में हम क्या करते थे? पहले तो हम जो T टेस्ट करते थे, वहाँ पे क्या था? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेरा क्या होता था? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता था? T टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता था डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन. डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन, वहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक और एकदम एक चीज हम आपको और समझा रहे हैं. टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स इन द स्टैटिस्टिक्स. दोनों दो चीजें. स्टैटिस्टिक एस नहीं लगा हुआ, स्टैटिस्टिक्स दोनों दो चीजें. आप मेरे किताब को देखिएगा ध्यान से, स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, एस नहीं लिखा हुआ है. उस पर एक बार हमको फॉरेन से कंप्लेन कर दिया था कि आपने एस नहीं लगाया, दैट इज द एरर. उसको हम जवाब दे दिए ठीक से. स्टैटिस्टिक मींस द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर. स्टैटिस्टिक्स मींस डाटा एनालाइज्ड. बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. हम इसलिए बोले हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि पैरामीटर एस्टिमेटेड, पैरामीटर वैल्यू हाइपोथेसाइज्ड, standard error of parameter estimated. That is the statistic. It is the statistic. वहां पे क्या था? T में population में. यहाँ पे क्या है? B. यहाँ पे क्या है? B. That is the regression coefficient. यहाँ पे estimated क्या हो रहा है? Regression coefficient. Then the parameter value hypothesized. Hypothesized क्या हो रहा है? B is equal to B0. That means it becomes 0. It becomes 0. Divided by standard error of parameter estimated. And parameter is the क्या है? Regression coefficient. यहाँ पे parameter है regression coefficient. अब यहाँ पे जब ये regression coefficient है, इसको भी फिर आप commonly यूज कर सकते हैं. ये जो फॉर्मूला है ऐसा नहीं है. It is commonly कहीं भी यूज कर सकते हैं. लेकिन पैरामीटर आपका क्लियर होना चाहिए. वहां भी हम आपको की में क्या लिखवाए थे? डिफरेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन मीन, डिफरेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, दैट यू म्यू 0. वहां पे क्या लिखते थे? म्यू 0 becomes 0 in the null hypothesis and divided by ACM x1 minus x. That is the common representation for the test statistics. Likely here. And here the SE. SE means SE of the किसका? Regression coefficient. Then this one is known. ये आपको जानकारी है. B का वैल्यू तो जानकारी है, निकल गया तो वहां से मिल गया आपको. पैरामीटर वैल्यू स्पेलिंग तो गलत हो गया ऐसा. वैल्यू हाइपोथेसाइज्ड 0, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेटेड. This one is we want to calculate this one again. AC of the regression coefficient can be calculated by. Now this factor is calculated by SB. It is the standard error of B.
Degradation coefficient represented by SB. Then SP is the root under S square XY. XY is the subscript. ये छोटा है इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है, but x dot y is in the subscript. ये नीचे है, ये देखने में साथ साथ लग रहा है लेकिन साथ साथ नहीं, यहाँ पर है नीचे है, ठीक है. स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x. x स्क्वायर वहां से आपको मिल जाएगा पूरा समेशन x. अब ये फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है. दिस फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय summation y square, small y, summation y square minus summation xy whole square. Both are the different things. Again, this one and here this one, both are different things. It is the individual value and it is the square of the total value. Square of the total value. इसे पर ध्यान दीजिएगा. Summation xy square divided by summation x. So one, ठीक है, and divided by n minus 2. And here it is the n minus 2 is the degree of freedom because it is unusual. Commonly we use the degree of freedom by n minus 1. Generally we use the degree of freedom as the n minus 1, except in the two population conditions where n minus 1 we use. Here the n minus 2 we are using here the n minus 2. That means one is for the x and one is for the y. Why so here the n minus 2? That is the degree of freedom. In this way we calculate the extended error of degradation coefficient. Extended error of degradation coefficient. Then we get this value and this value. And now you put the value in the t statistics. T is equal to b minus b0 divided by sp. B naught is equal to 0. Then we easily get the value of the t. Clear? And after getting the value of the t, we check the probability value from the t table at the 0.05 level. At the 0.05 level. ये बता तो क्या टी टेबल देखने के लिए. एंड यहाँ पर जब देखें तो वो क्या हो जाता है? That is the rejected. क्या होना चाहिए? रिजेक्ट हो जाता है. कॉमनली रिजेक्ट हो जाता है. जो परसेंटेज आता है उसमें रिजेक्ट होता है. नहीं होगा तो वहाँ पे आगे रिसर्च नहीं चलेगा. उसको रोक दीजिए. इनकेस अगर नहीं है तो now you use the calculate the one, we calculate the t value. Second, we calculate the confidence interval. Confidence interval for regression coefficient. Confidence interval for the regression coefficient. And that regression coefficient is represented by here. B, we obtain the p value plus minus t alpha 2n minus 2. ये conditions, it is the conditions by which we represent the test statistics. ये पहला बार हम आपको यूज कर रहे हैं इसलिए हम समझा रहे हैं. But it is the original method. It is the original method. इसके पहले हम नहीं बताए. I am telling first that any test of statistics, either AF, either T, either Z, whatsoever you do, either chi, in the subscript you must write the two parts for the proper representation. One, that is alpha 0.05. 0.05. Because you test the significance at the 0.05 level. That is the confidence level. So alpha 0.05 in bracket 2, that means the 210. If we use the 110, then you write here the 1. तो either 1 or 2, या एक लिखिएगा या दो लिखिएगा. At first alpha 0.05, that is the critical level. Then in bracket you use the 1 or 2. Then in bracket you use the degree of freedom. And here the degree of freedom is n minus 2.
तो whatsoever the value b plus minus whatsoever the value of the t at the 0.05 level, you obtain the value from the table when you test the significance, and then this value is multiplied by the standard error of mean. Sorry, the standard error of regression coefficient. In this way, we represent the 95% confidence interval of the regression coefficient. Okay, that means the regression coefficient represents the angular movement at the 95% level of the line. Angular movement, it may be 95% like this, then this one, and then this one. Okay? That represents the angular movement of the landing. But I want the 95% in the of the this one is also. And for that, we calculate the next value. 95% confidence interval of an estimated y. That is, estimated y means y hat. Estimated y means y hat. Okay? And here the formula is simply s y hat. This one is y hat is equal to s square y x. We calculated earlier for the during the calculation of this one, then 1 by n plus xi minus x mean square divided by summation x square. And this value is calculated for each x value. Each x value. Suppose we have the 5. If we 5 graded, that means we have the 5x value. And for the each value, we calculated the range. 95%. And then xy, if we calculate the xy, यहाँ पे तो सब समझा चुके हैं, यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं बच रहा है जो कि बच रहा नहीं बच रहा. And now the 95% confidence interval is y hat. Whatever we calculated from the equation, plus minus t 0.05 in bracket 2 x y hat. This one. ठीक है? It represents the 95% confidence. And when we obtain the 95% confidence interval, and suppose this one is value y hat and y, this one, and this one, and this one, and this one. Suppose 4. That means this one from 95 to 95 plus 95 to 95 like this, or whatever we get. Sorry, parallel. This one parallel. This one and this one. But always represented with the broken line. Okay? And in this way, a band is represented. And this one is referred as the confidence line. Clear? होगा क्या कि sometimes आपके कंट्रोल में एनिमल डेथ कर जाएगा. जैसे आपने कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया है, विदाउट कंसंट्रेशन इन समटाइम्स योर रिसर्च some animal mortality is observed in the control medium. Control means zero. The treatment is zero. आपने कोई टॉक्सिकेंट उसमें नहीं डाला, लेकिन 5-7 या 2 एनिमल या 1 एनिमल क्या करेंगे, डेथ कर. तो आपने तो वहां पर टॉक्सिकेंट दिया नहीं था, वो टॉक्सिकेंट आपने दिया नहीं था, लेकिन उसमें वो मर गया. तो दैट प्रोवाइड्स ए एरर इफ the death rate in the zero concentration is not neutralized further. ठीक है? Then a method is present which is responsible for the neutralization of the mortality rate. ठीक है? वो जब आप रिसर्च में आएगा तो समझाएंगे, उसको उधर बहुत डिटेल में आएंगे. बट इसको याद रखिएगा, it is
it always remembers that when the animal or mortality rate of the any component is observed in the without treatment condition, okay, then the factor of the different concentration is adjusted accordingly. And second one is also necessary here. In this one, if you suppose the this one here 1 by n, if we anyone want to add two groups, मान लीजिए कि एक ने अपना स्टार ने वर्क किया एक ही केमिकल पे और उन्होंने भी क्या नाम होता है साक्षी एक ही केमिकल पे वर्क किया, तो लेकिन इनका एनिमल ग्रुप सेम था, राइट ही था, लेकिन अलग ही उनका एनिमल ग्रुप अलग था, उन्होंने अपना काम। एंड दिस वन, अब ये चाह रहे कि हम दोनों को मिला के हम तब हमने किए बनाए क्या उसको वाई रेंज बैंड। So it is possible here in this condition. And then 1 by n is further added by 1 by m. Suppose that number is 1, m. Then plus 1 by m. Then this one is added. आप उसको add कर सकते हैं. And here when y value, sorry, x value is 0. When x value is 0. अगर यहाँ पे जो x है ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट अगर ये 0 हो जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? इट इज माई क्वेश्चन, आप सब पूछ रहे हैं। अगर इस वैल्यू को हम 0 कर दें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? x y है। if we consider that x1 becomes 0, हमने 0 पे इसको कैलकुलेट किया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? x y है। XY हाँ? इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट अगर ये 0 हो गया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ए पे पहुंच जाएगा। That's it. Thank you.